Students, today we are going to derive the distance formula, chapter 7, coordinate geometry. So we are given 2 points P and Q, coordinates of point P, x1, y1, and point Q, x2, y2. We have to find the distance between P and Q. What we will do? From both of these 2 points, we will drop the perpendicular to both the axes. From point P, PM is perpendicular to x-axis, and here PN is perpendicular to y-axis. Similarly, from point Q, QR is perpendicular to x-axis and QS is perpendicular to y-axis. If we produce NP to the line segment QR, and here T is the point of intersection. So we know these are parallel because this angle is 90, it is also 90. These 2 lines are parallel. If these are parallel, these 2 angles will also be equal, means angle T is also 90 degree. To find the distance PQ, we have to apply Pythagoras theorem here, for which we need to find PT as well as QT. हमारा पर्पस क्या है कि PT डिस्टेंस फाइंड आउट करनी है और QT, PT कितनी होगी MR के इक्वल और QT कितनी होगी SM के इक्वल. ओके, नाउ PM कितनी वैल्यू होगी? अगर आप यहां से देखो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, x1, y1, clear? It means this height PM will be equal to ON. So MP or PM is equal to ON is equal to how much? ये वाली हाइट कितनी होगी? y1, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स इसके x1, y1 है. y1. And what is the value of OS and QR? Both will be equal. So QR or RQ is equal to SO. And what is this distance? y2, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट x2, y2 है. यहां से यहां तक आपके पास जो डिस्टेंस है दैट इज y2, और ये वाली डिस्टेंस आपके पास कितनी है? y1. इट मींस आपके पास TR की वैल्यू भी कितनी होगी? y1. इज इट? ये वाली डिस्टेंस भी आपके पास TR इज इक्वल टू PM और MP, वो भी कितनी होगी? y1. हमने अगर ये वाली हाइट फाइंड आउट करनी है QT, वो कितनी आ जाएगी? y2 minus y1. Similarly for the base, OM डिस्टेंस आपके पास कितनी है? x1, क्योंकि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है? x1, y1. एंड डिस्टेंस OR वो कितनी है आपके पास? यहां से यहां तक इट इज x2. It means this distance MR is equal to PT. कितनी हो जाएगी? x2 minus x1. Now in this triangle PTQ, this angle T, that is angle PTQ, is equal to 90 degree, and PT base is x2 minus x1, and this perpendicular QT is equal to
y2 minus y1. Now apply Pythagoras theorem to find out the distance between PQ. So PQ will be equal to x2 minus x1, this distance, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, PT square plus QT square under root of that. Because it is distance, तो हम इसको किस में रखते हैं, mod में. You can write here reason. Pythagoras theorem. So PQ is equal to square root of PT, that is this much, x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. Okay, mod PQ under root of x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. इस फॉर्मूला को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला, 2 पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस. अगर इसमें हम x2 minus x1 की बजाय x1 minus x2 लिखते हैं, then also it will be same, because square of negative number, that will also be positive. Suppose you are given 4 points A, B, C, D. अगर आपको 4 पॉइंट्स गिवन है A, B, C, D, आपको फाइंड आउट करना है कि ये गिवन फिगर स्क्वायर है, रोम्बस है, पैरेललोग्राम है या रेक्टेंगल है. सो A, B, C, D is a number 1 rhombus if all sides are equal. AB is equal to BC is equal to CD is equal to AD. सबके डिस्टेंसेस मींस पॉजिटिव वैल्यूज. रोम्बस के लिए सिर्फ आपको ये 4 साइड्स चेक करनी है. अगर चारों साइड्स इक्वल हैं, इट विल बी रोम्बस. सेकंड, स्क्वायर इफ, स्क्वायर कब होगा, इफ इट इज अ रोम्बस एंड बोथ द डायगोनल्स आर इक्वल. इट मींस उसमें रोम्बस की प्रॉपर्टीज भी होंगी और दोनों डायगोनल्स इक्वल भी होंगे. ये वाली सारी होंगी. AB is equal to BC is equal to CD is equal to DA or AD. All 4 sides are equal and AC is equal to BD. Both the diagonals will also be equal. Then it will be a square. Number 3, parallelogram. Parallelogram. If opposite sides are equal, both the pairs, that is AB is equal to CD. अगर आपके पास ये 4 पॉइंट्स हैं A, B, C, D, so AB will be equal to CD and AD will be equal to BC. Both the pairs of opposite sides are equal. Then it will be a parallelogram. Next is number 4. Every rectangle is a parallelogram also, as every square is a rhombus also. तो स्क्वायर में rhombus की प्रॉपर्टीज होल्ड होती थी, ऐसे ही पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज रेक्टेंगल में भी होंगी. सो रेक्टेंगल क्या है? It is a parallelogram in which both the diagonals are equal. So it is a rectangle if AB is equal to CD, AD is equal to BC, and both the diagonals equal. That is, अगर ये आपस में इक्वल है लेकिन डायगोनल्स भी इक्वल होने चाहिए. AC is equal to BD. ABC are collinear points if
sum of two distances is equal to third distance. सम ऑफ टू डिस्टेंसेस का मतलब क्या, जरूरी नहीं ए बी प्लस बी सी ए सी के इक्वल होना चाहिए, डिपेंड करता है सेंटर पे कौन सा पॉइंट है। क्लियर? सपोज दीज आर 3 पॉइंट्स, तो सम ऑफ दीज टू डिस्टेंसेस, ये वाली डिस्टेंस प्लस नेक्स्ट डिस्टेंस, इन दोनों का टोटल किसके इक्वल होना चाहिए, थर्ड डिस्टेंस के, तभी ये कोलिनियर पॉइंट्स होंगे। क्लियर? अब इसमें अगर तो ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये सी है, तो बी बीच में लाई कर रहा है, देन वी कैन से डिस्टेंस ए बी प्लस डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू डिस्टेंस ए सी। क्लियर? अगर ए और बी इंटरचेंज है, बी पॉइंट, यहां पे पॉइंट बी है, यहां पे ए है और यहां पे सी है, तो क्या होगा, बी ए प्लस ए सी इज इक्वल टू बी सी। क्लियर? तो आपको अगर नहीं पता कि पॉइंट सेंटर वाला कौन सा है, साइड वाले कौन से हैं, तो हम सिंपली डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, तीनों डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर लेंगे, ए बी, बी सी एंड ए सी। तीनों डिस्टेंसेस को फाइंड आउट करके देखते हैं, सम ऑफ टू स्मॉलर डिस्टेंसेस शुड बी इक्वल टू थर्ड डिस्टेंस। क्लियर? और अगर ये पॉइंट कोलिनियर नहीं है तो then what will be there? तो इनकी ट्रायंगल बनेगी, कोलिनियर मीन लाई ऑन द लाइन। अगर ये कोलिनियर नहीं है, सपोज थर्ड पॉइंट इज समवेयर एल्स, इस लाइन पे नहीं है, then what will be there? इनको ज्वाइन करने से ट्रायंगल बनेगी। सो ए, नोट नंबर 1, नोट नंबर 2, ए कॉमा बी कॉमा सी आर not collinear if sum of two distances not equal to third distance। ठीक है, ये नॉन कोलिनियर, नॉट कोलिनियर होंगे या नॉन कोलिनियर होंगे इफ सम ऑफ टू डिस्टेंसेस नॉट इक्वल टू थर्ड। और ट्रायंगल कब फ्रेम करेंगे, व्हेन सम ऑफ टू डिस्टेंसेस इज ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस। व्हेन सम ऑफ टू डिस्टेंसेस ग्रेटर देन थर्ड डिस्टेंस, ये तो आपने किया हुआ ना 9th में, सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल ऑलवेज ग्रेटर देन third side and difference of two sides is always smaller than third side। ये conditions आपको पता होनी चाहिए, limits of sides of the triangle। हमें इसमें क्या करना है, कोलिनियर और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स ही फाइंड आउट करने हैं। ट्रायंगल ABC is number 1 equilateral if B is equal to BC is equal to AC, अगर इनकी तीनों साइड्स आपस में इक्वल है। सेकंड, आइसोसेलेस if any two sides, जरूरी नहीं कि AB is equal to BC हो, कोई भी टू साइड्स अगर इक्वल हो, if any two sides are equal, two sides equal means you will find any two distances, तीनों distances find out करनी है, AB BC भी find out करनी है और AC भी find out करनी है। इनमें से कोई two distances आपस में equal होनी चाहिए। Clear? So we can say every equilateral triangle is also isosceles triangle। अगर आप डिस्टेंसेस फाइंड आउट कर रहे हो और आपको प्रूव करना है कि इट इज आइसोसेलेस ट्रायंगल,
और पहली दो डिस्टेंसेस इक्वल आ जाती है, then you need not to find the third distance. Then for right angle triangle, it is a right triangle if क्या करेंगे, sum of squares of two smaller distances is equal to square of थर्ड कौन सी डिस्टेंस होगी, थर्ड जो ग्रेटेस्ट डिस्टेंस है. If sum of squares of two smaller distances is equal to square of third जो सबसे बड़ी डिस्टेंस होगी, greatest distance. You are given 2 points. You have to find the distance between these 2 points. So formula क्या होता है distance का, d is equal to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square under root of that. अब इनमें से कुछ जरूरी नहीं है कि इसी को आपने x2 y2 लेना है, आप इसको भी x2 y2 ले सकते हो. क्लियर? एनी. तो हमने क्या किया, x1 2, y1 3, x2 4, y2 1. So distance d 4 minus 2, square of that 1 minus 3, square of that whole under root. So it is 2 square plus minus 2 squares under root of that. Square 4 minus 2 square is also 4. So it is how many 4s? 2. लिख सकते हैं ऐसे. You can write 8 also. Under root 8 भी लिख सकते हो आप. लेकिन हमें पता है कि अंडर रूट 8 जब हम लिखेंगे उसको फर्दर हमें 2 इंटू परफेक्ट स्क्वायर की फॉर्म में लिखना पड़ेगा. ठीक है, तो अंडर रूट 2 एज इट इज. व्हाट इज अंडर रूट 4? 2. सो डिस्टेंस d is 2 अंडर रूट 2 यूनिट्स. नेक्स्ट इज थर्ड पार्ट. Question number 2. Find the distance between the points. You are given 2 points. Can you now find the distance between the 2 points, 2 towns A and B discussed in the section 7.2? आपके बुक में है ये सेक्शन. वो एग्जाम्पल देखोगे, वहां से टाउन्स देखोगे और उनके बीच की डिस्टेंस निकालोगे. I hope you will be able to do